लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून, नमक 1/4 टीस्पून और हल्के जायका, गरम मसाला पिसा हुआ हाफ टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून। लाल गोश्त के लिए सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स है तरार की मिर्च का पेस्ट जो कि है 4 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 पूरा लेमन लेना है, हाफ कप ऑयल और 1 kg मीट। आप बीफ ले सकते हैं, आप इसमें चिकन भी ले सकते हैं या आप इसके अंदर मटन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इसकी मैरिनेशन। अच्छा, मैरिनेशन के अंदर ये क्या ऑयल को थोड़ा सा गरम करके ऑयल हमेशा आप जानते हैं इसके अंदर नॉर्मली तरार की मिर्च जो तरार की मिर्च जो होती है वो तीखी हो। अगर आपके घर में तेज है तो आप नॉर्मल रेड चिली भी ले सकते हैं। हम इस सबको मिला देंगे। इसको जो है मिनिमम 1 आवर और ज्यादा अच्छी टेस्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो हम इसको भी मैरिनेट करके रखते हैं 1 घंटे के बाद जो है हम तेल को बिल्कुल हल्का सा गर्म करेंगे। आपका बॉईल है। अच्छा, हमने लेमन जूस भी ले लिया है क्योंकि मैं उसे जो है एंड में मैरिनेट किया हुआ जितना पानी गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल होता है हम उतना डाल के इसको हल्की आंच पे रख देंगे एटलीस्ट 50 to 60 मिनट्स ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जी, तो ये हमारा जो है 1 घंटे के बाद लाल गोश्त तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ रस।
Garnish with green chilies, ginger. Allah Hafiz.